It's our pleasure to have with us our proud alumni. The late night coding sessions, the thrill of solving that one stubborn bug, the dream of building technologies that will shape our world. What does that journey from student to innovator truly looks like? That's exactly the question we are here to explore today. A very warm good evening to our esteemed alumni, respected faculty members, and all the bright minds joining us. I am Arya. And I'm Deepak Raj. It's our privilege to welcome you to Connoisseur, an exclusive alumni connect session organized by Computer Engineering Society of Madan Mohan Malviya University of Technology. Let's begin by introducing the remarkable individuals who have joined us today. Our proud alumni whose journeys span across diverse domains of technology. First, we are delighted to welcome our respected alumni, Pankaj Rana sir, who is currently contributing at Bharat Electronics Limited. Welcome, sir. Adding more brilliance to our panel, we have our respected alumni, Mr. Praganand Singh sir, as a research staff at Bharat Electronic Limited. Welcome, sir. And soon with us, our respected alumni, Asta Singh ma'am, who is currently contributing as software development engineer at Wingify, will be joining us. And finally, we extend a warm welcome to our respected alumni, Ms. Yashaswi Shahi ma'am, who currently associated with Tejas Networks as a research and development engineer. Thank you, ma'am. To all our distinguished speakers, thank you for joining us, for taking time out of your schedules to guide us today. Your journey truly embarks excellence and perseverance. Through this session, our goal is to bridge the gap between what we learn in classrooms and how those lessons translate in real-world innovations and impacts. By inviting speakers who once sat in the same lecture hall and faced the same uncertainties, we create a space where experience meets aspiration. Their journey from being students navigating academic pressure to becoming professionals shaping industry serve as a living example of how knowledge, perseverance, and vision come together beyond textbooks. This session is not just about listening to success stories, but about connecting education with purpose, inspiration with actions, and theory with tangible outcomes in world outside academia. Let's begin by taking a trip down memory lane, back your days. Here at Triple NUT, college life often feels like a balance between academics, coding, projects, and exploration. So could each of you share a defining experience or key strategy from university years that helped shape your professional foundation? Respected alumni, Pragyanand Singh sir, we would like to start from you. Hello, Good evening, sir. Good good evening, evening, sir. bhai. Is my voice आवाज आ रही है भाई? Yes, sir. और कैसे हो सब? Very good, sir. Very good, sir. कैसा चल रहा है सब कॉलेज में? बढ़िया चल रहा है, सर. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, सब लोग आ गए तो. Yes, sir. Yes, sir. Hello everyone. Good evening, sir. Good evening, Good evening, guys. sir. Good evening. Good evening.
Again, sir, we would like to start from you. ठीक है तो एक सेकंड Sure, sir. अभी तो सभी चारों ऑल ईयर्स के होंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स सभी Yes, जूनियर्स sir. होंगे ना अच्छा, Yes, sir. तो सब फिर कोडिंग वोडिंग चल रही है तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा क्या मेरे से अभी Yes, नहीं sir. ना अच्छा क्या क्या The question was, can you share a defining experience or key strategy from your university years that helped shape your professional foundation? अरे यार देखो यार फर्स्ट ईयर में तो सब ऐसे ही चल रहा था स्टार्टिंग से Yes, sir. सब हम लोग भी परेशान थे सारे जितने हो सकते हैं टेक्स्ट सब ट्राई कर रहे थे मैंने सेकेंड ईयर में शुरू किया था मैंने सबसे पहले सीपी वगैरह पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था सेकेंड ईयर में आते Yes, sir. आते लेकिन धीरे धीरे पता चलने लगा कि अगर जल्दी जल्दी इंटर्नशिप वगैरह चाहिए तो सीपी उतना काम नहीं कर रहा है तो फिर डेवलपमेंट भी ट्राई किया है सब धीरे धीरे सब थर्ड ईयर में आते आते थोड़ा बहुत गेट का भी तैयारी शुरू होने लगा Yes, लेकिन sir. ऐसे ही है धीरे धीरे तुम लोग को मैं यही बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर में तो अब एक्सप्लोर करो जो फर्स्ट ईयर का भी जूनियर्स हैं कि पहले एक्सप्लोर करो जितने भी सारे हैं कि क्या क्या अच्छा लग रहा है तुम लोग को क्या अच्छा नहीं लग रहा है अभी बहुत सारे टेक्स्ट हैं जो तुम लोग को आएंगे अपना बेसिक्स जो भी है मतलब पहले फर्स्ट ईयर में सब कुछ थोड़ा बहुत ट्राई कर करके डिसाइड कर लो और सेकेंड ईयर से उसके ऊपर ग्राइंड करना शुरू कर दो मैंने बेसिकली किया था सेकेंड ईयर से ही मैं सीपी वगैरह शुरू किया था और फिर थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत गेट की तैयारी की थी तो उससे वो बेसिक्स जो कंप्यूटर नेटवर्क्स और इन सब के कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बेसिक्स वगैरह कुछ क्लियर हो गए थे तो बस यही Yes, सब sir. है इन्हीं सब से लास्ट में सबका एकदम मिक्सचर काम आ गया Yes, sir. Thank you, sir. Moving next, we would like to call our respected alumni, Ms. Yashaswi Sahi ma'am, for the same question. Please, ma'am. Hello everyone. Hello. Hello, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Evening. Good evening. Okay, so what was the question? Please repeat again. You, the question was, could each of you share a defined experience or key strategy university years, the professional foundation? Okay, so I don't think any particular key strategy works. Suppose it depends on person to person. Suppose, but I think one thing everyone should follow is the consistency. Like you can't think that I will do everything in third year or final year. Is my voice audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So main thing is that you have to explore everything. It's not like you can stuck in one place and you will be like, I will do this only. Following the present scenario, I think you need to explore everything, but you have to be very good in any one thing. Suppose you are doing CP, development, AI, anything you can do. But the main thing is, if you see the today's scenario of IT sector, now you have to be very flexible. So the main key is like explore everything, try everything, know what are your interests and hard work. Hard work, without hard work, nothing will happen. And you have to be consistent. It's never like it's your college life, so you completely enjoy. You have to balance both your enjoyment, your studies, your academics. Apart from academics, you have to learn many things. So yeah, I think it's just about keeping a balance because college life will also never come again. You can't miss out like
I will only study, study, study. That is a good thing, but it's not the everything. I think you should enjoy your college life also to the full. Like never miss out on anything, any fest, any activity, do everything. Because engineering is what I think tells you that how to manage everything. Because in your coming life, you will be used to how to handle pressure and how to do multiple things at a particular time. So yeah. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Following up next, we would like to have this question from our respected alumni, Pankaj Rana, sir. Yeah, hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, Yeah, sir. okay. So, Good evening, sir. good Good evening, evening. sir. So, what's the question? So the question is, can you share a defining experience or key strategy? What helped you the most to shaping a professional foundation, sir? Sorry, key strategies for. Key strategy from your university years that helped shape your professional foundation, sir. Okay, so actually, basically, in my first year, when I came to the college, I was I did some research about coding in 12th, like in 11th, 12th. We have courses like Python in our schools. So I did Yes, sir. have a little bit knowledge about coding. So I have some interest. So before coming to the college, I did some research about languages, and I started with C, and I started CP, and I got very fond of that competitive programming. And throughout first year, second year, third year, and my final year, I did that. Yes, sir. CP helps me a lot developing my problem solving skills, and also helps me to get my internship at Coach Chef. Like from the first year, I did coding on Coach Chef, and that CP also gave me the chance to get intern at that particular platform. So for me, mainly competitive programming was the thing that helps me a lot. Along with that, but what I have realized with all the in all these years, like only competitive programming cannot help you right now. You have to be flexible, like said. Yes, Today's sir. IT market is very flexible, so you have to know about development also. You have to know about both of the things, CP and development. You cannot rely on any one single thing. So the best thing for you guys is explore everything, and find your interest, and go ahead in that field, and try everything, what I would say. Yes, sir. Thank you, sir. Following up next, we would like to ask the same question from our respected alumni, Ms. Astha Singh, ma'am. Astha ma'am will be joining us soon, Arya. Okay. Thank you for all those wonderful reflections. It's fascinating how different experiences, whether it's research, internship, or pure curiosity, can lead to success in so many forms. A quick follow-up. Looking back, what's one thing you think is overrating during students' life and one thing that's underrated but truly valuable for growth? We would like to hear from you, Raganan, sir.
भाई अगर कोई एक चीज को मैं अगर बताऊं तो आई थिंक जितना सीपी को ओवररेट किया गया है, Yes, sir. इतना सीपी बाद में प्लेसमेंट्स वगैरह में, अगर किसी को पीएसयू या फिर एमटेक वगैरह करना है तो अलग बात है, उसमें तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन अगर प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए भी सीपी से ज्यादा, कोर सीपी से मतलब एकदम बेसिक केवल सीपी के बेसिस पे बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है। मेन तो लोग सोचते हैं कि केवल सीपी करना है। आई थिंक वो उसके पीछे की मेन चीज को भूल जाते हैं। सीपी मेन नहीं है। सीपी मतलब सीपी के लिए जो आप कंसिस्टेंसी और जो हार्डवर्क करते हैं वो मेन चीज है। हो सकता है कि जैसे आपने सी प्लस प्लस वगैरह में काम किया, जो सीपी के लिए जो बेसिक्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि जैसे आपने सी प्लस प्लस या पाइथन या जिसने भी सीपी जावा में सीपी कर लिया, आप जाके वहाँ पे जो कंपनी को ज्वाइन करेंगे वहाँ पे वो टेक स्टैक की यूज ना हो रहा हो, आपको ऑल टुगेदर एक नया टेक स्टैक मिल जाए, एक नया तरीके का प्रोजेक्ट मिल जाए, या बिल्कुल जैसा मेरा फील्ड है, रिसर्च का फील्ड है, तो इसमें पूरा पूरा हो सकता है कुछ नया ही डेवलप करना हो, एक टेक ही नया बनाना हो। समझ रहे हो? तो जो Yes, मेन sir. चीज है बहुत अंडररेटेड है, वो है कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। जितना तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि बेसिक्स पे फोकस करो। बेसिक्स हर जगह यूटिलाइज होते हैं। बेसिक्स को लोग छोड़ देते हैं और उसके ऊपर फिर सोचते हैं कि हर रोज मैं इतने क्वेश्चन कर लूंगा, उतने क्वेश्चन कर लूंगा। वो बहुत ज्यादा यूट्यूब वगैरह पे और इन सब चीजों के चक्कर में सैलरी दिखा दिखा के वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिक्स इम्पोर्टेंट है और वो जो है कि कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क करने का जो जरूरत है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Yes, sir. Thank you, sir. Those are the powerful insights. Let's now turn to a few focused questions that reflect the dilemmas many students face right now. Now it's our pleasure to have with us respected alumni Asta Singh ma'am, who is currently contributing at Wingify. Welcome, ma'am. Hi everyone, it's Yusuf. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Which year is present in this meet? Yes, ma'am. Which year is present? Third year, final year, and First year also, ma'am. okay, I'm the okay, Every year first is year, present, ma'am. ma'am. okay. Yes, ma'am. So, ma'am, we are going to our questionnaire section. So, starting with our first question is placement versus higher studies. When standing at that crucial crossroad, what factors should students weigh before deciding between taking up a job or pursuing higher education? Okay. Yes, Uh, ma'am. on this, I think it's more about personal choice as well. Uh, Job gives you financial security, but there are many people who really aspire to have higher studies, maybe an MBA or an MTech. So it really depends. There are a lot of good options in higher studies as well. So I'll say that they can consider it as an option if they want to. But Okay, ma'am. on the other hand, there is no. Yes, ma'am. Okay, sorry. I was saying that it's cool if even if you choose either option have their own pros and cons. So it's really your choice what you go with. For higher studies, I can say that you can also consider MBA, MTech. There are also a lot of good options abroad. So if anybody wants to pursue for abroad studies, they can also do some research on that. There are some really good countries who are offering good MBA programs, and especially in Europe region. So if someone is trying to pursue that, there's a good option there as well. I think Yes, ma'am. it's totally a personal choice. It's just finding out the best method for themselves. Both of them are equally as good. I've seen some of my seniors doing really good after pursuing an MBA, so that's also a great option.
So I will not say that job is the only security you are getting. Pursuing studies is also a really good option. So it's totally up to your choice. Whatever you want to choose, just do a good research on that and just give your 100% on that. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Coming on to the next question, roadmap for coding platforms. With platforms like LeetCode, HackerRank, and Codeforces, how can a student progressively improve their problem solving without getting lost or demotivated? Respected senior, Yashasvi Sahi ma'am, we would like to have your insight on this. Okay. So coding for first year, so I would like to say that start with the very basic, because there are very few people, I think, those who have any idea about coding before college. Like I was one of them. I had no idea what are languages, what is coding, what are coding platforms, and what do we do in it. Like, because till 12th, I haven't done any coding part. So when I initially came in my first year, I was like, everyone is doing coding, I also needs to do it. So the basic and the very good platform for first year or the new beginners is HackerRank, no doubt. You will get an idea that what is basically coding, because what we do in coding is the main question I was having in my first year. Like, why do we do it? How to do it? Like, suppose you get the very basic problem, sum of two numbers. So that anyone can get it now, like sum of two numbers, we add it and we get it. So why is it different that we write in a coding language, it has a proper format and everything? So for that, I think you should start with HackerRank very first, and I think you will get a language also in your first year only, C language. So you can start with that, and based on your interest, then you can level up your coding skills. Like go to Codechef. Second is Codechef. Codechef is also very good. It organizes weekly contest, you can participate in that. It will build thinking of like a logical building. It will inbuilt in you that how to think, like day by day when you will give more and more contest, you will get more and more stars, and then it's like a process. Yes, Each step you will get to learn many things, and then you will get a logical building. So that is very important in whole IT sector or in anywhere field you go. The main goal of coding is to think. Like you should have the ability to think that how can I solve a problem, because in IT sector what we do is you will get a problem and you have to resolve it. So it depends on you how broad you can think of a problem or its solution. How can you optimize it? That is the main goal, the end goal you can think. So try coding. I think that I have also done. I did it. I think I did for my entire 4 years. I started with HackerRank, then I shifted to Codechef, then I shifted to Codeforces. Codeforces, personally, I felt it as very difficult. So the most of the time I spent on was Codechef. So yeah, like it is, like you can't distinguish that coding is only related to CP or something. Like if you are doing yes, a web development problem and tomorrow you get any issue that why this is not working or this is working, so there also you need to think. You have to find a solution, and finding solution is just coding. These platforms will tell you only a simple basic rule to find solution. And for coding, the best is Striver sheet, Striver A to Z, or there are so many sheets. So Striver, I think, is the best. Initially, you will not get to know what he is teaching, or because it's bit high level. But yes, after a time, if you are used to coding, so you should go for Striver. Follow it very sincerely. It is not like you have to stuck. If you are stuck, see the solutions. If you get it, better next time if you do. And coding is never like once you have done a question so you will remember it. If for a month you leave the coding or any coding platforms, next month you are not going to remember anything. It's just about till the time you are doing, you will know everything, and by the time you stops, your learning stops there. Even the things you have learned previously, that also you will start forgetting it. So I think for the entire 4 years you should have this habit of coding, so that will help a lot. okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for your guidance. Now coming up for the next question is role of CGPA in your experience.
How much does CGPA truly influence one's opportunity, both in early phase and later stages of a career? Respected senior Asta ma'am, we would like to hear from you. CGPA, honestly, I mean, it does matter to a point. Obviously, having something like 5 pointer or 6 pointer is not that good when you sit for placements. But Yes, ma'am. really doesn't make a difference if you have 8.5 or 8.8 or 9. So higher the CG, you get better opportunities, nothing like that. You do need to clear a cutoff. So there is a cutoff. Okay, ma'am. Maybe you can consider it on a safer limit to be 8. If not, you can also take it as 7.5. That is also good enough. So just cross that and just stay above it. You'll not be missing any opportunity. Companies do not think that having higher CG means you have better skills or anything. They actually Yes, really ma'am. look for your coding skills. So that really wouldn't play a point if you are like the topper or anything. Just have a good, decent CG. Try to avoid having backlogs. A lot of companies will restrict you from even sitting in the placement if you have a backlog. So Yes, ma'am. just put a focus on that. CG is a matter, but not. I would say that's not the first priority you should be going for. Just keep it as a point that you should be just above a particular mark to be decent enough to be sitting in placements. Okay, thank you, ma'am, Thank you, for ma'am. insights. Coming up to the next question is on balancing academics and skill development. Most of the students face this issue that how to balance academics while working on skills that is important for one's career. Respected senior Pankaj Rana sir, we would like to have your insight on this. Uh, See, balancing academics and your skill development. So actually, Yes, sir. I myself not able to balance very well my academics and my skill developments. What happens is I usually do study in exam time at that and at that time I stop doing everything CP and development. So what happens is uh, you cannot like you have to figure first thing is you have to figure it out by yourself how you're going to balance your skill development and your academics. It is totally depends on you how you is going to you going to balance that. I myself Yes, sir. not able to balance that very well, so I cannot say that how to do that, but what I have realized is it is a very important thing to do that. So what happens is if you are not going to balance properly, if you did 3 months skill development properly, and then your exams came and you stopped working on your skills, what will happen is you will start forgetting. So whenever exams come, it will take almost a month. In that time, if you are not doing anything other than studying your academics, then what will happen is you will start to forgetting what you have done. This Yes, happens sir. a lot to me. Like what I did some topics on DSA. I learned strings, tracks. So guys, I'll be back in 2 minutes. Sure, sir. But till then, moving on to the next question, that is other skills and qualification. What are the skills apart from academics and technical knowledge one should work on for landing good in corporate sector? Respected senior Praganand Singh, sir, we would like to hear your insights on that. I think if you are talking Yes, sir. about soft skills, if you are talking about soft skills, I think the सबसे पहले जो मेन चीज है वो है कम्युनिकेशन स्किल. Yes, sir. कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आपको कोडिंग आता भी है या अगर आपको मान लीजिए
किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है, फुल नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपको यही नहीं आता कि उसको दूसरों को बताना कैसे है, तो कुछ नहीं फायदा है। Yes, मेरे sir. साथ बहुत टाइम ऐसा हुआ कि मान लो मैंने टेक्निकल राउंड्स क्लियर भी कर लिए, इवन एक कंपनी आई थी, उसके 4 टेक्निकल राउंड्स थे, कोडिंग राउंड वगैरह, वो सब क्लियर कर लिया। लेकिन Yes, sir. उसके बाद जाके लास्ट में जब एचआर राउंड होता है, जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल रियली मैटर करता है, तो वहाँ पे Yes, जाके sir. मैं फंस जाता था। ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मतलब टेक्निकल स्किल्स तो ज़रूरी हैं, उसके अलावा उसके बिना तो कुछ नहीं होना, लेकिन उसके साथ-साथ कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे अपनी बातों को दूसरों को समझाना है। लैंग्वेज आई डोंट थिंक इज़ लाइक इन इंग्लिश और हिंदी, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा चीज़, हाँ, कॉन्फिडेंस। भले तुम, कई बार होता है इंटरव्यूज में, भले तुम गलत बता रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन अगर Yes, कॉन्फिडेंस sir. के साथ बोल रहे होगे तो मान लेते हैं। उन लोग भी टैकल करना समझते हैं, उन लोग को भी पता होता है कई कई बार कि झूठ बोल रहा है, लेकिन उन लोग बोलते हैं कि ठीक है, एक बार के लिए। ऐसा नहीं कि पूरा झूठ ही Yes, sir. बोले जा रहे हो, झूठ ही बोले जा रहे हो। उन लोग, मैंने 10 क्वेश्चन पूछा, उसमें से 8 क्वेश्चन झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं, लेकिन 1-2 बार जब उनको पता भी चल जाएगा तो उन लोग जाने देंगे अगर तुम्हारी दूसरी चीजें अच्छी होंगी, मतलब तुम कॉन्फिडेंस कम बता पा रहे होगे। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी नॉलेज होगा उस चीज के बारे में, तो थोड़ा और ज्यादा ओपनली, थोड़ा बहुत इधर उधर से सोच के उस चीज के बारे में बता सकते हो। अगर तुम पर्टिकुलरली नहीं पता किसी क्वेश्चन के बारे में, लेकिन तुम कॉन्फिडेंट हो, तो तुम फिर भी बता जाओगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लाइक Yes, sir. जब हम फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग और ये सब करना शुरू कर देते हैं, कोडिंग करना शुरू कर देते हैं, सेकंड ईयर से सीटी बहुत ज़्यादा एकदम हर रोज सीटी कर रहे हैं, Yes, sir. लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो क्वेश्चन देख के बोलते हैं कि इसका कोई मतलब ना, क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा। इसी तरह कोडिंग कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं तो सोचते हैं कि बस हो गया। मान लो तुम एक दिन कोडिंग कर रहे हो, हाँ? Yes, जैसे sir. वेडनेसडे और थर्सडे, मैं भूल गया, मैं भी बहुत दिनों से नहीं कर रहा हूँ कोड से पे। वेडनेसडे थर्सडे को होता है ना, तो मान लो Yes, sir. वेडनेसडे को Contest Wednesday. Yes, sir. वेडनेसडे को हाँ? तो मान लो वेडनेसडे को कॉन्टेस्ट है, Yes, sir. तुमने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन जो होते हैं इजी वाले, मतलब Yes, ये sir. तो मान लो सेकंड ईयर के लिए हो गया, सेकंड ईयर एंड अबव के लिए Yes, हो sir. गया। फर्स्ट ईयर तो अभी कभी नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बस बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो तुमसे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो बस ये मत सोचो कि बस कॉन्टेस्ट खत्म हो गया, इसके बारे में ये खत्म। तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इस बात को दिखाए तुम्हें, मतलब ना, इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि तुम उस कॉन्टेस्ट को खत्म होने के बाद वो क्वेश्चन दोबारा से जाके सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, बट नॉट जस्ट दैट क्वेश्चन, व्हाट गोज बिहाइंड दैट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा मैटर Yes, sir. करता है। कि Yes, मतलब उसमें जैसे कि जो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर वगैरह क्या लग रहा है, तो ये सब चीजें तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और बेटर करेंगी। तो ये भी है कि क्वेश्चन जो सॉल्व ना हो पाए, लग रहा है कि तुमसे सॉल्व होना चाहिए था, या थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ एक दो चीजें और सीखनी तो ये सॉल्व हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ईएफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करो जो एकदम हाई लेवल वाले हैं, लेकिन जैसे थर्ड फोर्थ क्वेश्चन कई बार उतने सॉल्व नहीं होते, तो उनको देखा जा Yes, सकता sir. है। ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में, तो ये दोनों 2-3 चीजें हैं काफी ज्यादा जरूरी है सॉफ्ट स्किल्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स और ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, योर कॉन्फिडेंस। तो Yes, sir. आई थिंक दिस थिंग्स रियली मैटर। Thank you, sir. following up next, the question is, how much importance does the referral hold? Everyone knows that how much networking matters during or after the college. So what are your views on importance of referral? Respected senior, yes, Aswikhahi ma'am, we would like to have your insight on this question. Referral. Yes, Okay, ma'am. Yes, ma'am. just a minute. Sure, ma'am. Networking, IT sector, and networking. Both are very interrelated. Like you should have very good networks in every field. Like suppose if you want to go, not just for referrals, networking also means that you will get a proper guidance. Like I'm stuck somewhere, I have no one to ask. Like I'm doing web development, I'm doing coding, but what after that? How will I get a job? That's a totally different thing. So
networking is very important, like with your immediate seniors, because they, anything you can say that they have just a year more experience than you. They will know that, yeah, in this semester or in this year you will come, so you will face this issues. They have already faced it, so they can help Yes. you in any way. So Yes, you ma'am. should go for networking. You should have very good people, or based on your interest. Suppose you are going for higher studies or coding, you are interested in CP or web development, whatever it is, you should Yes, find your ma'am. seniors. Or like I think Triple M has a very big alumni base also. So to anyone you can message on LinkedIn, and I think most of the people, they will reply you, they will help you. So you can ask any of your Yes, ma'am. doubt, like I'm stuck here, how should I apply, what should be the format of resume, everything. Like I myself, my resume was not being selected at many places, so few of my seniors from the college only, I went, I went to them, I told that like my resume is not being selected, what should I do, what changes should I make. So they are very helpful in these cases. If they are in a position to give you referral, they will surely give you, because everyone wants to help. Like you can't grow without networking, or like it's not a alone journey that you can cover it. Like you need people. So it's up to you how you contact people, how you get in touch with them regularly. You will surely get help. Like few days back only, I got a message from one of my junior. It was related to some projects and all. So I have done projects, I have like given many interviews, so I know that like this project is important and what should you know in the project. Because Yes, ma'am. after a point of time, if you will give many interviews and all, you will get to know like there is a particular pattern every companies or every technical lead who is taking your interview, they will follow it. Like they need these questions. And it was, it got very obvious after a point, like you should know, like they will not cover everything, but few things, most 90% of the interviewers, they will cover it. So these all experiences you will get only after a particular time. Like if you're not, if you have not given interviews, you will get, you will think a lot, like what should I do, what should I not do. And if at that point of time, if you get anyone who has already experienced it, they will help you in 5 minutes, and it will make only your life journey or whatever professional journey, it will make you it will make it easier. So you should go for networking. You should take help from everyone. Taking help is not a bad thing. Ask how much you can ask. Either they will reply or they won't. That will not create any difference. If they reply, it's Yes, your ma'am. plus point. If they won't, then also no need, we will ask with someone else. So have that positive attitude that you have to learn, so you need to ask. That is the one thing. And referral also, referral helps a lot. Suppose if there is a thing called internal hiring. Suppose on LinkedIn, if you will see any hiring, so every company, every time, it is not like they will post on LinkedIn and then you will get to know. There are many internal hiring. Suppose a company is big, in a particular team someone needs a single guy, so they will not go and post it on LinkedIn. But if you are a part of that team, you will know that there is a hiring. So if you are in contact with Yes, ma'am. someone, you will surely tell that there is a hiring, I'm giving you the referral. So you will get the interview link. If you clear, you can get the job. These kind of benefits you will only get if you will have a good networking. And I think Yes, networking ma'am. is very good, you should do. And just explore. LinkedIn is the best profile. Just search. If you are searching from your particular college, you will get thousands of people in every field, in every company, either higher studies, Google, Amazon, everywhere. You can get at least one or two people you will get from your college. So just give a message that I am from Triple MUT, and they will surely reply, I think. Yes, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. I just want to add one point कि Yes, Yes, sir. yes, ma'am. Please, sir. LinkedIn का एक वीकली लिमिट होता है. तो मैं सब चाहूंगा कि सब अपना लिमिट पूरा रीच करो. हर वीक में एक भी बर्बाद मत करो. जितना हो सके. तुम्हें लग रहा है कि ये जरूरी है, Okay, नहीं sir. जरूरी है, कॉलेज से है या तुम्हारे ड्रीम कंपनी से है कोई बंदा या कॉलेज का कोई बंदा है, सबको लिंक, सबको रिक्वेस्ट भेजो, सबको भेजो. कभी ना कभी क्या पता कोई काम आ जाए. ठीक है. और अगर तुम लोग जॉब Yes, हंटिंग Yes, ma'am. कर sir. रहे हो तो एक फॉर्मेट बना लो और उस फॉर्मेट को भेज दो. बस भेज दो. ये मत सोचो कि हम 3 लोगों को भेज रहे हैं, 4 लोग भेज रहे हैं, अगर 2 का रिप्लाई आ गया, 4 का रिप्लाई आ गया, सबको भेजो.
कई बार तो ऐसा होता है कि एक का भी Okay, रिप्लाई नहीं आता, लेकिन फिर भी भेजो ऐसे ही। और फॉर फाइनल ईयर एंड थर्ड ईयर के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम लोग ऐसा मतलब ना बल्क में ईमेल्स करना भी शुरू करो, कई बार काम आ जाते हैं। ये सब कर सकते हो अगर चाहो तो। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you all for such a candid and inspiring discussion. It's now to take up some questions from the audience we have. So, coming up the first question from the audience, which career is best for CSE? Software engineering or anything else like data analysis or scientist, web developer, app developer, something like that. So we would like to ask this from Raganan Singh sir from you. यार देखो, ये बहुत ज्यादा मतलब ऐसा सबके लिए अलग अलग हो सकता है। इसका कोई Yes, sir. जनरल आंसर नहीं है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या डेटा एनालिसिस या एमएल वगैरह। तो मैं इसीलिए बोल रहा था पहले ही कि देखो फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करो जितनी भी फील्ड्स हैं। ऐसे एक एक महीना दो दो महीना दे के अच्छा अच्छा लग रहा है तो उसको कैरी ऑन करो और दूसरा कुछ और ट्राई करो, करते रहो ट्राई। फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर के, हाँ नहीं सेकेंड ईयर इंक्लूड मत करो। फर्स्ट ईयर में ट्राई करो, सेकेंड ईयर से सीरियस होना चाहिए आई थिंक। तो सब कुछ ट्राई करो। और बहुत लोग हो सकता है कि जैसे मेरे को डेवलपमेंट और कोडिंग अच्छा लगता था, लेकिन किसी को नहीं लगता, उसको कॉलेज ज्यादा पसंद हो, उसको रिसर्च करना ज्यादा पसंद हो। लेकिन जैसे मैं अब रिसर्च फील्ड में आ गया हूं, तो जरूरी नहीं है, लेकिन सबके लिए अलग अलग हो सकता है ये चीज। अगर तुम लोग बहुत अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करो, एमएल जैसे आजकल के जमाने में एमएल का बहुत ज्यादा नाम है, बहुत ज्यादा Yes, sir. रिक्वायरमेंट भी है हर जगह एमएल और डेटा एनालिसिस का। तो तुम लोग ये सब भी देख कर ट्राई करो। अगर एमएल अच्छा लग रहा है तो करो, डेफिनेटली करो, बहुत ज्यादा स्कोप है। इसी तरह कोडिंग का भी, मतलब कोडिंग या फिर लाइक जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इसका भी बहुत ज्यादा स्कोप है। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो करो। तो आई थिंक कि एक्सप्लोर करना सबसे अच्छा चीज है। अगर एक चीज और है कि जैसे अगर तुम्हें बहुत जल्दी फाइनेंशियली स्टेबल होना है तो फिर तो तुम्हें Yes, प्लेसमेंट वगैरह के बारे में सोचना होगा। नहीं तो तुम लोग रिसर्च के बारे में भी सोच सकते हो, रिसर्च भी बहुत अच्छा फील्ड है। अगर हायर स्टडीज अगर तुम लोग को चाहिए तो रिसर्च भी काफी अच्छा है। तो मैं यही कहूँगा कि सब कुछ ट्राई करो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर से थोड़ा सीरियस हो जाओ, थर्ड ईयर से तो बहुत yes. सीरियस हो जाओ। Okay, sir. Thank you, sir. so coming to the next question from our audience. As a first year, what skills should I focus on? Could you repeat the question? So actually, the students are asking, as a first year, what skills should they focus on and how to improve their skills so that they can do better in their subject, what field they are choosing. Everything. The simple answer is everything. You have to focus on everything. देखो, फर्स्ट ईयर में जैसा सभी ने कहा, तुमको एक्सप्लोर करना होगा सब चीज़ें। ऐसा नहीं है Yes, कि sir. तुम पहले से Yes, डिसाइड करके sir. आ सकते हो कि मुझे यही करना है। मे बी Yes, वो sir. तुम्हें बाद में अच्छा लगे ना लगे। तो इसलिए तुम्हें सब कुछ ट्राई करना होगा फर्स्ट ईयर में। तुम्हें वेब डेवलपमेंट भी देखनी होगी, तुम्हें अगर इंटरेस्ट है तो ऐप डेवलपमेंट भी देखनी होगी, तुमको AI ML पसंद है वो भी देखनी होगी। एंड जब ये सब देख लोगे उसके बाद ही तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। एंड उसके बाद ही तुम Yes, कोई एक फील्ड अपने लिए फाइनलाइज कर सकते हो कि तुम्हें इस फील्ड में जाना है। सो फर्स्ट ईयर में सब कुछ ट्राई करो, सब कुछ सीखने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें फर्स्ट ईयर में बेस्ट होना है उस चीज़ में, बस तुम्हें ट्राई करना है। जब एक बार तुम ट्राई कर लोगे सब चीज़ें, तुम्हें जब आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, देन उसके अकॉर्डिंग तुम अपना सेकंड ईयर, थर्ड ईयर उस चीज़ पे दे सकते हो, पर्टिकुलर थिंग पे। सो फर्स्ट ईयर में किसी एक स्किल्स पे फोकस बिल्कुल मत करना, सब कुछ ट्राई करना। तुम्हें जो भी दिखता है, जो भी तुम्हें चीज़ें मिलती हैं, उसको एक बार ट्राई ज़रूर करना। Thank you, sir. Now coming up to the next question is that how does someone from a core branch manage time and build the coding skills along with the core subjects? Asta ma'am, we would like to ask this question from you.
Okay, so for the core branches, the thing is, yes, it's little hectic schedule for you because core branches Yes, subjects, ma'am. to be honest, I think are more tough than computer science subjects. And along with that, you'll have to manage practicing DSA, developing your projects, everything. But the fact is that it's possible. I think I've seen a lot of people do that, and there's enough time in the college. We do not give a lot of time for our exams. हर कोई एक रात पहले ही बैठता है, I'm sure. बहुत ज्यादा तो Yes, दो ma'am. रात पहले बैठते हैं सब लोग, right? बाकी you have an Yes, ma'am. entire semester there for you. Attendance का भी उतना नहीं रहता है, कुछ कुछ teachers होते हैं strict. Rather than that, I think कोई दिन में 1 या 2 घंटे कॉलेज जाते हो सब लोग. तो I think there's plenty of time if you really want to put in the effort. And the fact is that it's just not it's hard for you because it also opens multiple doors. Core branches वालों का ये है कि आप core की companies में भी बैठ सकते हो. There are companies that come for the core branches that are really good, offering really good package, and they do a mass hiring kind of thing, bringing 20, 25, 30 people at once. So Yes, ma'am. you have multiple options. You'll have more opportunities. So a little bit of more effort, but it opens a wide variety of doors for you. तो थोड़ा सा extra effort I think बनता है. आपको exams नहीं देने हैं तो you'll not have to cover all these subjects. बस कुछ major DS and practice थोड़ी सी CP वगैरह की and maybe a couple of projects, थोड़ा सा basics of C and an operating system बस. तो आई गेस वो अगर आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर में भी कर रहे हो तो इजीली कर लोगे. बट हाँ, आपको सीपी वगैरह थोड़ा सा फर्स्ट सेकेंड ईयर पे देखना पड़ेगा. तो आई थिंक विच इज वेरी डुएबल. हम मैं बहुत सारे सीनियर्स हैं यार अपने कॉलेज के. इफ यू ट्राई टू गो ऑन लिंक्डइन, दे आर एट रियली Yes, गुड ma'am. कंपनीज लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच. इलेक्ट्रॉनिक्स के तो बहुत हैं, राइट. एंड ये Yes, ma'am. सीएससी वालों का ना थोड़ा सा रहता है कि उनको लगता है कि उनको मिल जाएगी जॉब बहुत इजीली, तो वो थोड़ा कम एफर्ट पुट इन करते हैं, टू बी फेयर. एंड आई हैव सीन कि बाकी ब्रांचेस से ना पीपल हैव कम अप एंड दे गिव यू रियली फेयर कंपटीशन एंड दे विल बीट यू एट इट. तो कोर Yes, ma'am. ब्रांचेस के स्टूडेंट्स ना दे रियली पुट इन द हार्ड वर्क बिकॉज दे थिंक कि उनको ज्यादा मेहनत करनी है एंड इन टर्न एट द एंड इट्स ऑल अपोजिट. सीएससी वाले डाउन हो जाएंगे. तो सीएससी वालों को भी जस्ट बी अवेयर बिकॉज कोर ब्रांचेस आर रियली स्ट्रॉन्ग. एंड कोर वालों को भी मैं यही बोलूंगी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालो. इट्स रियली डूएबल. अ लॉट ऑफ पीपल हैव डन इट, सो यू कैन डू इट टू. बस अपना टाइम थोड़ा सा सही से मैनेज करना. अवॉइड मतलब थर्ड ईयर फाइनल ईयर में ही है मेनली, बाकी उतना नहीं फर्क पड़ेगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में. थोड़ा सा अपना वो बना लेना बस कि मुझे किस फील्ड में जाना है, तो स्टार्ट डूइंग सम डीएस प्रैक्टिस, डू कॉन्टेस्ट देते रहना यार. ये मैं सारे ब्रांचेस को बोलूंगी, इट्स वेरी क्रूशियल बिकॉज वो जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम सॉल्विंग का सपोर्ट देगा वो कोई चीज नहीं देगी. दैट इज नॉट समथिंग यू कैन डू ओवरनाइट. तो वो चीज इंपॉर्टेंट है. कॉन्टेस्ट हमेशा देना, मतलब एटलीस्ट वीक में 1-2 कॉन्टेस्ट तो देना ही देना एटलीस्ट. बेयर मिनिमम है वो. एंड बाद में यू कैन जस्ट पुट इन योर 100% एफर्ट एंड ट्राई फॉर प्लेसमेंट्स. तो कोर ब्रांचेस को भी यही है यार कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालो यार. तुम लोग बेटर निकाल सकते हो सीएससी वालों से. टू बी फेयर निकाला भी है हमारे सीनियर बैचेस में. तो दैट्स वेरी डूएबल. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Moving to the next question from our audience. The students are asking, what type of projects are needed and how to focus and when they have to start preparing for it? We would like to ask this question from our respected alumni, Yashasvi Sahi ma'am. Please, ma'am. Yes, projects. Uh, I think Yes, you should ma'am. work. It depends, like you are doing AI ML project or web development project. So initial phase will to go in learning. Like I Yes, think in ma'am. first year only you will learn basic about front end and back end. Few back end technologies also you will get in your subject. So you have to build projects. At the end, projects will give you a bit idea how industries work or how full IT sector works. Like it will help you. Like there are many projects.
So initially, though, I think you should take a very basic front end projects, like, but keep a hand on it, like how keep growing your projects. Don't think like in 1 year or in 1 month only I will go and I will take a full stack project and I will learn everything. It doesn't go like that. So you have to start from basics, learn the languages, learn React and everything, build a front end project, take help from YouTube. GitHub gives you a wide variety of projects. So take a help Yeah. from in second year till second year. I think Yes, you should ma'am. have a strong hold on front end part at least. So and by third year starting or third year mid, you should have a good projects, because if you want to get an internship or something, so you should have a resume by third year mid or third year starting. Because it's not like today you are building your project resume and from tomorrow you are getting interview calls and everything. It's a long process, so everything you have to be prepared. Try to do before time, I would like to say. Like if you have learned the languages, keep learning on it, keep exploring new things, what new technologies, like 3D views and many things are there. So try to learn everything and then develop a good project. By third year mid, you should have a project. That's very important in your resume, and you should have a good resume. After that, if you start applying after a long struggle, you will get the interview chance and everything. Even the market is very tough these days, so you have to put an extra effort. So in whatever field you want, you should have a project. And try, just don't think that I will build a very good project in one go. It will not happen. So start building mini projects, like small few front end, then add few basic back end in it, then develop a full e-commerce website or whatever you like, whatever is based on your interest. If you have something new in your mind, try exploring that. You have to like from our batch, or like these days ais are used a lot. So Yes. Yes, you ma'am. can take help from it, but you should know that what this AI is doing. You can't just say that give me this project, give me the entire code. You should know what is in the code, what is the workflow, how is it working. Suppose I need to change this. Suppose if you are copying anything, any project also, that's also not a bad thing. If you are taking in initial days, if you are taking it from YouTube or something, but try to modify it, like think on your own that I want this to happen not in this way, in this way. And then you explore, go Yes, through the ma'am. code, make your own changes. Like this, I think you will get a good hand on projects and build a project by third year mid, I think. Thank you, ma'am. Coming up to the next question, which has been asked a lot of language available for programming. So which language should we choose in addition to C language, which will be more time efficient and more helpful for me in future? Whether should we go with CPP or Python or Java? Respected alumni Pankaj sir, we would like to have insights on that. See, every language has its own benefits. Like Yes, sir. if you go with Java, so in Java itself Yes, sir. Yes, sir. learn there are some front end frameworks for Java, and there is a backend also, Spring Boot and other things. So if you go with Java, you can complete your full stack development within Java itself. And if you go with Python, then you can go with then it can benefits you in AI, ML, and machine learnings. And for CPP is a good for competitive programming. It is a fast language, and like in competitive programming, timing matters. So how fast your code executes. So if you are doing competitive programming, then CPP will help a lot. So according to your need, you have to decide your language. No language is bad, और like ऐसा नहीं है कि कोई खराब है कोई अच्छा है. सबके अपने हाँ, फायदे हैं अपने नुकसान है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम तीनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो. तो जो तुम्हारी नीड है पहले वो फिगर आउट करो, देन यू कैन फाइनलाइज योर language. Either you want to go with Java, C++, or Python. Like
इफ यू लाइक तुम्हें AI पसंद है और तुम्हें उस पर काम करना है, देन जावा या C++ करने का कोई मतलब नहीं है फिर ना। Yes, sir. फिर तुम्हें पाइथन के साथ ही जाना होगा। सो अकॉर्डिंग टू योर नीड तुम्हें लैंग्वेज फाइनलाइज करनी होगी। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Now moving to the next question from our audience is that how important are internship and from when should we start doing them and how did you decide which company or roles should be targeted? Respected alumni, Mr. Pragyanandan sir, we would like to hear from you. Okay, can you please repeat the second part of the question? So actually we are asking what type of companies we should target for the internship. Okay. तो आई थिंक अगर तुम लोग प्लेसमेंट्स को टारगेट कर रहे हो तो इंटर्नशिप्स मैटर करेंगी, रियली मैटर करती हैं। एंड आई थिंक थर्ड ईयर के लास्ट में, लाइक जो फाइनल ईयर से पहले ब्रेक होता है, उसमें इंटर्नशिप Yes, करना sir. चाहिए। बहुत लोग जिसको मिल रहा है अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोग सेकेंड ईयर के बाद, मतलब थर्ड ईयर से पहले वाला जो समर ब्रेक होता है, उसमें भी इंटर्नशिप के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं और खराब इंटर्नशिप भी ट्राई करते हैं। Yes, तो मैं बोलूँगा कि Yes, sir. वो एक मौका होता है 2 महीने का, या जो भी 1-1.5-2 महीने का गैप होता है, उसमें जो तुम्हारी बेसिक्स हैं उसको स्ट्रेंथन करो, अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको एम्पावर करो। तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है बजाय इसके कि कोई भी इंटर्नशिप कर लो। बट फ्रॉम जब थर्ड ईयर के बाद का जो समर ब्रेक होता है, उसमें Yes, ट्राई sir. करना चाहिए कि कोई ना कोई इंटर्नशिप जरूर करो। मतलब अगर बहुत ही खराब है तुम्हारे, बिल्कुल ही उसके जो लाइन है उससे बिल्कुल ही अलग है, तो नहीं, वो मत करो। लेकिन अगर मैचेस कर रहा है, जैसे मान लो प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई रोल है, भले उसके लिए अगर तुम्हें पेमेंट भी नहीं मिल रहा है, फिर भी एक इंटर्नशिप फाइनल ईयर से पहले करना चाहिए। यही है। अच्छी कंपनी मिल जाए तो और अच्छा है। तो उसमें भी yes, sir. नेटवर्किंग का बहुत रोल आता है। जब नेटवर्किंग में है सबको Yes, sir. वैसे ही ब्लॉक बहुत सारे ब्लाइंड मेल्स करो। नेटवर्किंग में जा कि जितने भी लोग हैं लिंक्डइन पे, इसलिए बोल रहा था ना कि अपनी लिमिट्स रीच करो, जितनी भी लिंक्डइन की जो 200-250-300 की जो लिमिट्स होती हैं, उसको रीच कर दो सब। Yes, sir. लास्ट में जब खोलोगे तो ऐसा नहीं लग रहा हो कि तुम आज ही उनको रिक्वेस्ट भेज रहे हो, आज ही ये भी भेज रहे हो कि सर भेज की ना कोई रोल हो तो बता दीजिए। तो इसलिए Yes, sir. ऐसा करना गलत नहीं है, लेकिन पहले से अगर थोड़ा बहुत रहता है तो और अच्छा होता है। तो यही है कि ट्राई करो। मतलब सेकंड ईयर के बाद वाला ब्रेक है, उसमें तुम लोग ये करना ज़्यादा सही रहेगा कि आई थिंक ये करना ज़्यादा सही रहेगा कि जो अपनी वीकनेसेस हैं उन पे काम करो, और जो थर्ड ईयर के बाद वाला है समर ब्रेक, उसमें इंटर्नशिप ढूंढो कोई अच्छा था। इसके लिए थर्ड ईयर के मिड से ही ट्राई करना शुरू कर दो इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि जिस दिन फॉर्म भरा फिर सेकंड डे इंटर्नशिप हाथ में है। बहुत टाइम होगा एकदम Yes, sir. लास्ट राउंड में जाके कैंसिल हो रहा हो। तो थर्ड ईयर की मिड से ट्राई Yes, करना, sir. या थर्ड ईयर के स्टार्ट से भी ट्राई करना शुरू कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। तो बस यही। Thank you, sir. दैट्स ऑल। Thank you, sir. Uh, Coming up to the next question from the chat section. See, many people face that their English is not good because many of them are from the Hindi medium background. So, what steps they should take to improve their English because it is very important. And also, they want to know in C language what are the requirements, how to start the roadmap. So for this question, we would like to hear from Astha ma'am. For English, yeah, I would say it's not very, very important. It does play a role in Yes, ma'am. particular some cases, but it's not the most important thing. बहुत सारे टेक्निकल इंटरव्यूज में इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल एक्सप्लेनिंग योर आंसर इन इंग्लिश, यू कैन जस्ट से दैट कैन आई बी switching my language to Hindi or something. So it's not the primary concern. हाँ, मतलब the thing was more about soft skills. उसमें you need to have confidence whatever language you are speaking with.
speak it Yes, with ma'am. confidence, be confident about your answer, and मतलब वो presentation is more important than the language used. But हाँ कभी कभी मतलब लगता है कि थोड़ा सा हो जाता है, तो if you want to work on particular English, तो यार Yes, यही ma'am. है कि no matter how many books you read or how many English series you watch, you won't get the communication skill there. So for communication, you'll have to go with speaking practice only. And for speaking, यार मैं कहूँगी कि go with your roommates or any of your friends. ऐसे ही just have some chats in English. Or there are a lot of मतलब online you can go for English speaking practices where Yes, ma'am. you can अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो तुम लोग ना अगर प्रॉपर ही करना है तो IELTS की इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, वो बहुत अच्छा तुमको वो दे देगा कि what vocabs you have to use, what speed do you have to maintain when you are speaking to an audience, a mass audience या फिर इंटरव्यू भी दे रहे हो तो that is one thing you can opt for. And जितना हो सके स्पीकिंग प्रैक्टिस करो, रीडिंग एंड राइटिंग एंड ग्रामर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. स्पीक विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स, या मतलब हाँ तुम लोग सब फ्रेंड्स में बात कर लो, हॉस्टल में कर लो, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लो, खुद से बात कर लो. जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, पिक अ रैंडम टॉपिक, गिव योरसेल्फ मे बी 90 seconds or like maybe 180 seconds to think about the topic, and then can you speak for non-stop 5 minutes or 6 minutes something about the topic, and when you're doing it record it and then re-listen it later on कि फिर तुमने कहाँ पे कितनी Yes, बार ma'am. तुम रुके, कितनी बार तुम्हें वो लैग फील हुआ, डू यू थिंक दैट यू कुड हैव प्रेजेंटेड योर आइडिया विद बेटर वर्ड्स, बेटर यूज ऑफ अ सेंटेंस, राइट? तो वो चीज तुम खुद को नोटिस करो, रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड देन यूज द सेम टॉपिक एंड वापस से करो, डू द सेम टॉपिक पे जस्ट गिव अ स्पीच मे बी 3 times 4 times and then you will notice over time कि you will get better on it. That is one method you can use. अगर किसी को लगता है कि उनकी ग्रामर बहुत खराब है तो वो मैंने बहुत लोगों का मतलब आई हैव सीन कि है ना पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस वो सब मिक्स मिक्स कर देते हैं तो थोड़ा सा वो हो जाता है. तो Yes, उस ma'am. पे भी यू कैन वर्क लिटिल बिट कि हम मतलब ऐसे एक्सट्रीम ग्रामर की नीड तो नहीं होती इंग्लिश में व्हेन यू आर स्पीकिंग, बट हाँ बेसिक्स ग्रामर ना गलत करें, है ना? अगर कोई रियली कंसर्न है अबाउट देयर इंग्लिश, बहुत लोगों को इनसिक्योरिटी हो जाती है या फिर दे डू नॉट फील कॉन्फिडेंट स्पीकिंग इन हिंदी इन एन इंटरव्यू, तो इफ यू Yeah, हैव ma'am. इनफ टाइम तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में यू कैन पुट योर एफर्ट ऑन इट. थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ ग्रामर देख लो, ट्राई स्पीकिंग इट. मतलब बेस्ट तो यही है यार कि खुद को रिकॉर्ड करो. नॉट एवरी टाइम यू विल हैव योर फ्रेंड्स, मतलब वो फ्रेंड्स वाला ऑप्शन है, बट नॉट एवरी टाइम देयर इज समवन अवेलेबल अराउंड यू जिनके साथ you will be comfortable doing it. So if you, that is not the thing, best option is to record yourself. And sometimes then maybe you can learn one new word or something, try to use it. It will over time make your vocabulary really better. तो it's a long term effort. वो मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा. तो स्पेशली Yeah, मैं ma'am. फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को यही बोलूंगी, थर्ड ईयर को भी, कि अगर वो इफ यू वांट पुट एफर्ट इनटू इंग्लिश तो ये है कि आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में लो. ओवरनाइट गोल्स नहीं आते हैं इसमें, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बट मे बी 1 month और 2 months में you'll see a very vast difference in your speaking fluency. तो once you get a hold of that ना, तो उसके बाद you will be very easily be presenting your ideas. मे बी तुम्हें वो लीड कोड का आंसर पता है बट तुम वर्ड्स में नहीं समझा पा रहे हो तो उसका फिर कोई एसेंस नहीं रह जाता है. So Yeah, ma'am. once you get a hold of that, you can do that. Or maybe when you are practicing for interview, just तुमने एक question solve किया. Now you can just give yourself 10 minutes time कि तुम इसी question के solution को अपने interviewer को कैसे समझाओगे, कि what was your thinking approach. उसके बाद तुम्हारा first coding approach क्या था, फिर तुमने उसको optimize कैसे किया, what is the time complexity, space complexity. तो वो एक बार तुम अपने 10 minutes का session बना लो कि तुम उस question को explain कैसे करोगे. क्योंकि बहुत बार ये Yes, होता है कि तुम्हारा आंसर मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं होता है, बट इंटरव्यूअर को ये लगता है कि तुम्हारा थिंकिंग का थॉट प्रोसेस उनको पसंद आता है व्हेन यू एक्सप्लेन इट राइट. तो वो सोचते हैं, फिर वो तुम्हें हिंट देंगे कि अरे कैन यू जस्ट थिंक इट मोर ऑफ लाइक यूजिंग अ हीप और एनी अदर प्रोसेस, व्हाटएवर दे सजेस्ट फॉर दैट क्वेश्चन. सो एक्सप्लेनिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, है ना? लैंग्वेज डजंट मैटर, बट इफ यू फील कि यू वांट टू गो विथ इंग्लिश तो give yourself 1 or 2 months time and practice it on a consistent basis. That will give you a very good result on it. yes, ma'am. इसमें तुम Thank you लोग very much, एक ma'am. इसमें तुम लोग Yes, एक ma'am. और चीज ऐड कर सकते हो. मतलब ये मेरा थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस था. सब कुछ ठीक है, वो आस्था ने बिल्कुल सही कहा कि फ्रेंड्स हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हो सकते हैं.
तो तुम क्या करो, सिंपल सी बात, चैट जीपीटी पे जाओ। उस पे मैंने बहुत सारे ऐसे दिए हैं। मैंने चैट जीपीटी को बोला है अगर दोपहर में मेरा इंटरव्यू है, क्या दोपहर में मेरा इंटरव्यू है, इंटरव्यू में इस सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नाउ यू टेक माय इंटरव्यू। तो फिर चैट जीपीटी मुझसे एक क्वेश्चन पूछे, मैं उसका आंसर बिल्कुल वैसे दूंगी जैसा मुझे इंटरव्यू में देना है, और तुम उससे फीडबैक ले सकते हो। तो तुम्हें अगर किसी से भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा कि भाई मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी है, सामने वाले की तो बहुत अच्छी है, मैं कैसे बोलूंगा, तो वो कहीं ना कहीं और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है इंसान। तो सिंपल से जाओ चैट जीपीटी से बोलो कि मुझे इस टॉपिक पे बात करना है, यू आस्क मी क्वेश्चन इन इंग्लिश, आई विल गिव यू एन आंसर इन इंग्लिश एंड गिव मी फीडबैक वेयर शुड आई इम्प्रूव। वो सबसे बेस्ट है। चैट जीपीटी खोलो और अपना बोलो, डेली का कुछ ना कुछ, आधे घंटे 1 घंटे उसके साथ ही बातें करो, उससे भी बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Juniors, hope we have answered most of your queries. For further queries, you can reach us in a WhatsApp group. Thank you, everyone who have asked. Your questions made the conversations even more engaging and relatable. As we come to a close, we extend our deepest gratitude to our speakers. Respected alumni, Arthur Singh ma'am, respected alumni, Mr. Pragyan Singh sir, respected alumni, Ms. Yashasvi Shahi ma'am, and respected alumni, Mr. Pankaj Rana sir, for sharing your experiences and wisdom with us today. Your insights have not only inspired us but also given us a clearer vision of what lies beyond the campus gates. A special thanks to our faculty members and organizing team for making this event possible. To all the participants, may today's conversation and remind you that every great career begins with small, consistent steps that is taken with passion and purposes. Until next time, keep learning, keep building, and keep striving for excellence. Thank you, everyone, and have a wonderful journey ahead. Thank you.